Yeah, I hope I'm audible to you. Am I audible? Okay. Good afternoon, friends. I'm Rajesh Gupta from SBI Security, and I welcome you all for today's webinar on IT sector and its outlook in the near term. Before I start, or let's say dig down to the details of IT sector, first of all, just look at how IT sector is important from economic point of view. So IT sector basically is one of the largest contributor to India's export. So India's total export is approximately $800 billion, and a major chunk of the export comes from the IT. So it has been a very important sector for last 2 decades or so. So IT sector within the services contribute nearly 50% of India's service exports. And not only that, but IT sector also employs close to 5.5 million people. It's a very important sector. Additionally, 50 to 60,000 people every year is added to the IT headcount. So it's also one of the largest employment generator for us. And finally, IT sector का जो weight है, I hope everybody is comfortable with Hindi and English both. तो I will use the mix of Hindi and English both. So अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो BFSI यानी बैंकिंग सेक्टर के बाद में सबसे बड़ा जो वेट आता है वो है आईटी सेक्टर का. So IT sector's weight as per the latest data available from NSE is 13.76% after BFSI, which is nearly 33%. So it is a very important sector which we cannot ignore it. And let me also tell you that IT sector contributes nearly 15 to 18% of Nifty 50 profit. तो जितने भी आईटी कंपनीज हैं निफ्टी के अंदर अगर मैं उनका टोटल प्रॉफिट निकालूं और कंपेयर करूं निफ्टी कंपनी से तो आई विल फाइंड कि 15 से 18% का जो प्रॉफिट है केवल निफ्टी कंपनी से आता है. भारत एक ऐसा कंट्री रहा है जो कई सालों से वी हैव बीन वन कंट्री इन द वर्ल्ड who is a quick learner. Okay, any new thing happening in the IT sector, we basically are among the few countries who features into early adoption of the technology. और जनरेटिव एआई उनमें से एक ऑप्शन है या एक वर्टिकल है जहाँ पे वी आर नाउ और अदर आईटी कंपनीज आर बिल्डिंग लॉट ऑफ देयर टैलेंट बेस इन दैट एरिया. And another reason why IT sector have been doing good is that the IT professional in India is as per their cost is concerned is lower as compared to developed world. And also within the Nifty 50 कंपनीज में अगर आप बात करेंगे तो 15 से 17% का जो टैक्स पेमेंट है वो आईटी कंपनी पे करती हैं. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर विच वी कैनॉट इग्नोर इट. आइए बात करते हैं फ्यू फंडामेंटल ट्रेड्स. यानी अगर आपको आईटी सेक्टर ट्रैक करनी है, आईटी सेक्टर में जानना है कि उनके अर्निंग्स के ड्राइवर क्या क्या हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. सो पहली बात तो ये है कि सोर्सेज ऑफ I hope I'm audible to all of you. Sorry, there was a small disturbance. So they were telling you that the IT sector derives revenue from two sources, either sale of product or sale of services. Services जो होता है वहाँ पे थोड़ा margin बेहतर होता है. Any company. So like for example, if you look at the global setup for the IT sector, India is basically Indian companies are mostly the service-driven organizations versus the product in case of developed world. And the key for any IT company to sustain their business near term or let's say longer duration is that कितने उनके पास प्रोजेक्ट हैं, क्लाइंट
उनके पास कैसे हैं, क्या वो क्लाइंट लॉन्ग टर्म में रुकते हैं, डील विंस क्या है. दीज एरियाज प्रोवाइड lot of certainty over the business outlook for the IT sector. Then distribution of revenue, जितने ज़्यादा क्लाइंट होंगे और जितना स्प्रेड होगा रेवेन्यू का, it will give you more certainty to the business going forward. So अगर let's say कि 50% 60% business come from top 10 client और let's say top 5 clients, तो क्या होता है कि there is always a risk for the client concentration. So जितना business diversified होगा client के across, that will help them to reduce the dependence on few client base. उसके अलावा डील विंस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब कोई आईटी कंपनी डील साइन करती है किसी बड़े कंपनी के साथ में, तो डील का एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब डील एग्जीक्यूट होंगे देन ओनली द रेवेन्यू ऑफ द कंपनीज विल ग्रो. एंड अनदर फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है. सो सर्विसेज के अंदर द मेजर कॉस्ट ऑफ एनी सर्विस कंपनी इज एम्प्लॉय कॉस्ट. सो जितना रेवेन्यू कंपनीज कमाती हैं आईटी, उसमें से 55 से 60% का जो कॉस्ट होता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट होता है. देयरफॉर एम्प्लॉय कॉस्ट को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईटी सेक्टर. एंड टैलेंट पूल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है हाईली मैन पावर ड्रिवन होता है. तो an IT company having the larger pool of talented people always give an edge over the others. तो एक तो होता है कि कंपनी फ्रेशर हायर करती हैं और एक होता है उनके पास ट्रेन मैन पावर होता है. तो जितने ज़्यादा ट्रेन मैन पावर होंगे that will give them the edge over the competitors. So talent pool is playing a very important role for the IT sector. Then attrition rate. Attrition rate का मतलब होता है कि हेड काउंट में से, यानी एम्प्लॉई बेस में कितने लोग छोड़ के जाते हैं और कितने नए ज्वाइन करते हैं. So let's say if I have 100 people in my company and उसमें से 10 लोग छोड़ के चले गए, so attrition rate is 10%. Now जब ये 10 लोग जाते हैं बाहर, तो we have to replace with the new one. So higher attrition rates creates cost for the company, कि नए टैलेंट को जो पुराने टैलेंट गए हैं उनको रिप्लेस करना is basically bring a lot of cost. तो एट्रिजन रेट जितना कम होता है उतना कंपनीज के लिए बेहतर होता है. ड्यूरिंग द कोविड टाइम, इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, एट्रिजन रेट वाज वेरी वेरी हाई बिकॉज द आईटी सेक्टर वाज बूमिंग दैट टाइम, एंड देयरफॉर it was very difficult for the most of the IT company to manage their attrition rates. So lower the attrition rate, better for the company. फिर आती है डील विंस की, डील पाइपलाइन की. सो आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, कितना उनका ऑर्डर है, कब तक आप एग्जीक्यूट करेंगे. सो डील पाइपलाइन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ पे डील को हम दो तरीके से दे सकते हैं. एक तो टीसीबी होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और एक होता है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एसीबी. सो टीसीबी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ सब्सक्राइबर फॉर एनी सर्विसेज एंड लेट्स से आई एम पेइंग 100 रुपीज पर मंथ. So for 6 months is my subscription period. So 600 rupees I will be paying for the next 6 months. So जो TCV वैल्यू होगा for that company it will be 600 rupees. तो वैसे IT कंपनी होती हैं. IT कंपनी पर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं प्रोजेक्ट्स, उनकी वैल्यू अलग अलग होती है. सो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है दैट इज बेसिकली डील पाइपलाइन फॉर देम, जो कि आगे चल करके एग्जीक्यूट होगा. डील पाइपलाइन जितना बड़ा होता है उतना ही सर्टेनिटी ऑफ रेवेन्यू मिलती है कंपनीज को. एक होता है एएसवी, एसीबी, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब क्या होता है कि अगले एक साल में कंपनी कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी. सो एसीबी गिव्स मोर सर्टेनिटी अबाउट द रेवेन्यू एज कंपेयर टू टीसीबी. फिर आता है ऑफशोर एंड ऑनशोर मिक्स. तो ऑफशोर में क्या होता है कि कंपनी सिटिंग इन इंडिया डूइंग द वर्क फॉर द क्लाइंट. जैसे अभी कोई क्लाइंट जो है यूएस में है, यूरोप में है, तो उनको हम यहीं से मैनेज करते हैं. तो आईटी कंपनी जब यहाँ से मैनेज करती हैं तो थोड़ा उनका मार्जिन बेहतर होता है. और ऑनशोर क्या होता है कि अपने बंदों को क्लाइंट के साइड भेजना पड़ता है वहां पे काम करने के लिए. सो अभी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो एज ऑफ नाउ आईटी कंपनीज का जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो आता है ऑफशोर से और कुछ हद तक आता है ऑनशोर से. गोइंग फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ कंपनीज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड द ऑफशोर साइड. एंड देन वी एबिट मार्जिन, जैसे बाकी कंपनीज के लिए एबिटा मार्जिन होता है, वैसे आईटी कंपनीज के लिए एबिट मार्जिन इज मोर इम्पोर्टेंट.
क्योंकि यहाँ पे कोई डिप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं होता है, कैपेक्स का रिक्वायरमेंट कम होता है, तो मोस्टली आई थिंक द इबिट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो बेसिकली ऑपरेटिंग मार्जिन होता है। जितना इबिट मार्जिन बेहतर होगा कंपनी उतना अच्छा करती है फ्रेंड्स। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल ट्रेड्स हैं, these are some of the fundamental parameters before that which you have to keep in mind while analyzing the IT sector. जैसे मैंने बताया कि आईटी सेक्टर का मेजर कॉस्ट जो होता है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज ली हैं, इनफैक्ट सेकेंड स्लाइड में और 10 कंपनीज हैं। तो मैंने यहाँ पे इन कंपनीज का एम्प्लॉय कॉस्ट दिखाया है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सो 2024 पहले है, फिर 23 है, 22 है, 21 है और 20 है। तो आप देखोगे कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इट इज रेंजिंग फ्रॉम 55 to 60% अप्रोक्सीमेटली। किसी केस में ज्यादा है, किसी केस में जो है वो कम है। तो कम से कम तो 50% रहता ही रहता है, एंड देयरफॉर मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ मैंने एट्रिजन रेट्स भी लिखे हुए हैं। तो क्वार्टर 1 जो अभी भी गया है जून महीने का, वहां पे एट्रिजन रेट लिखा हुआ है, और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर का भी एट्रिजन रेट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर जो हम देख रहे हैं वहां पे ऐसा हुआ कि एट्रिजन रेट जो काफी नीचे आया है, वाई एंड वाई सभी कंपनियों का एट्रिजन रेट जो है वो नीचे आया हुआ है। सो दिस स्लाइड इज जस्ट इन कंटिन्यूएशन टू दैट प्रीवियस स्लाइड। वहां पे 10 कंपनी थी, 10 हमने यहाँ पे और ऐड की हुई हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन द लास्ट 1.5 year और सो व्हाई आईटी सेक्टर हैव नॉट डन वेल। सेक्टर ने अंडर परफॉर्म क्यों किया है बाकी मार्केट के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास 2 स्लाइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली इसमें यहाँ पे 2 है, एक तो लाइन चार्ट है, एक है बार चार्ट। जो ब्लू चार्ट है दैट इज बेसिकली द टोटल प्रॉफिट ऑफ द निफ्टी कंपनीज, और जो लाइन चार्ट जो रेड कलर की है दैट इज इंडिकेटिंग द आईटी कंपनीज का निफ्टी के प्रॉफिट में कितना शेयर है, विच मीन्स दैट IT companies share of profit in the Nifty companies. So if you look at friends, in 2020, the share of IT company in Nifty 50 profit was 28%, which is dropped to 15.3% in 2024. तो जब प्रॉफिट डिक्लाइनिंग होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल में क्या होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ही उनको रिवॉर्ड मिलता है। अर्निंग इज द biggest most important factor which basically affect the price of the company. Okay, तो यहाँ पे अर्निंग नहीं होगा तो कोई कंपनी चलेगी नहीं। अर्निंग जब होती है then only it is get rewarded. So if IT companies revenue is going down and definitely the sector will not perform well. राइट हैंड साइड का जो हमारा जो स्लाइड है दोस्तों, यहाँ पे we have given 2 things. One is a market cap of the IT company in the Nifty and the share of their profit in the Nifty 50. So if you look at the blue bar, which is basically market cap, and red bar is basically the profit percentage share. So if profit percentage share is dropping from 28 to 22 to 20 to 18.9% to 17.6% to 15.3%, if the profit share is dropping, the market cap will also drop. So this chart basically tells you that the share price of any company is the slave of the earnings. If earning is good, the street will be street will reward that company. Now let's look at why the IT company were under pressure in the last few quarters or so. So friends, जो first reason है वो है high interest rate in developed world. तो जो यूएस का जो फेड का जो रेट है इट इज नाउ अप्रोक्सीमेटली 5.25 to 5.5%, जो कि 2006 के बाद में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। तो जब हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर स्लोज डाउन। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे हैव टू बोरो मनी एट अ हायर कॉस्ट। तो जब कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑलवेज दिस कंपनी गो फॉर अ प्रायोरिटाइजिंग, आई मीन सारे के सारे काम नहीं करेंगे, जो प्रायोरिटी के ऊपर होंगे कि उसके ऊपर ही काम होगा। दैट इज व्हाई वी सॉ द हाई इंटरेस्ट रेट हैव बीन द रीजन बिहाइंड द ड्रॉप इन द ओवरऑल एक्टिविटी इन द क्लाइंट साइड। फिर डॉलर का अप्रिसिएशन, if dollar I mean appreciates, basically it adds to the overall cost. Discretionary spending has faced a considerable slowdown,
जैसे अभी कोई बड़ी कंपनी यूएस के अंदर है, जैसे बिग कंपनी इन द यूएस, if the interest rate is rising and the cost of borrowing for those companies also rising, therefore they will not focus on those project which is not very important. So discretionary spending slowdown has led to considerable ramp down in their orders. So जब वो order execute नहीं होंगे तो earning of the IT company will be get impacted. And देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट जब आईटी कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स को लोअर प्राइस पर रीनेगोशिएट करना पड़ा. सो इफ द प्राइस ऑफ द ऑर्डर वाज लेट्स से 100 rupees, but because of the problem in the developed countries, the price is reduced to 90 rupees. So there is a 10% drop in the overall contract value, just for example. So deal renegotiation at the lower price also led to the impact on the earning of the IT companies. उसके अलावा द फोकस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनी शिफ्टेड, आई मीन दोस कंपनी विच आर द क्लाइंट फॉर द आईटी कंपनीज, ओके, their focus mainly shifted towards the cost optimization, which means that they want to spend some money but they want to maximize their returns. Okay, they become very choosy which project to execute, which is not to be executed. So that has led to a drop in the earnings of the IT company, and only selective projects were got executed or given the importance. The hiring of the IT companies was taken the breathing. So these were some of the reason, ये कुछ ऐसे reasons थे because of which the IT companies performance were impacted in the last few quarters or so. That's why the sector as a whole has not performed as compared to what Nifty has done or Nifty mid cap has done, or let's say for example the other broader market. Now let's look at the recent performance of the IT companies. So again, we have taken a top 20 companies ka list here, and here we have highlighted how they have done well in the recent quarters. So जो bold हमने mark किया हुआ है friends, the bold company suggests that these companies have seen a sequential drop in their sales. So इसमें बहुत कम companies, in fact most of the companies आप देखोगे तो उनके सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर. दैट मींस मार्च क्वार्टर एंड रिसेंटली गॉन वाज द जून क्वार्टर. सो इन जून क्वार्टर द कंपनी हैव डिलीवर्ड बेटर सेल्स ग्रोथ एज कंपेयर टू मार्च. सो दोस कंपनीज वी हैव हाइलाइटेड हियर इज दैट most of the companies have reported sequential improvement in their earnings. So you can see here Emphasis, Oracle, Persistent, Questcop, Sonata Software, TCS, Tata Elxsi, most of the companies have reported a sequential improvement in their performances, especially the sales part. Now, what are the key takeaways of the recent result? And अगर मैं recent result की बात करूँ तो क्या-क्या findings थी वहाँ पे? Number one, despite June quarter being a seasonally soft quarter, the number have been broadly in line with the market expectations. EBIT मार्जिन का एक्सपांशन हुआ है. मोस्ट ऑफ द कंपनी हैव सीन मार्जिन इंप्रूवमेंट, क्योंकि जब डिमांड नहीं था उतना आईटी सेक्टर का, तो जो उन्होंने हायरिंग की थी पहले उनको ट्रेन किया एम्प्लॉयज को और उनको कन्वर्ट किया बिलेबल हेड काउंट्स के अंदर. सो नाउ मोर एम्प्लॉयज आर अवेलेबल टू बी सर्व एज अ बिलेबल हेड काउंट फॉर द कंपनीज. तो उससे भी एक फायदा हुआ. जो मैनेजमेंट कमेंट्री है रिसेंट जो रिजल्ट गया है अभी, थोड़ा सा फेवरेबल लग रहा है. यानी आईटी कंपनीज अब ये कह रही हैं कि द ग्रोथ इज नॉट रिटर्निंग बैक. दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द आईटी सेक्टर एज अ होल. डील विंस इज क्वाइट डिसेंट, ऐसा कोई खराब उसमें देखने को नहीं मिला है. मोस्ट ऑफ द कंपनी हैव गुड ऑर्डर बुक इन द हैंड. क्योंकि सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए जो वेज हाइक है, जनरली क्या होता है कि जून महीने में सैलरी बढ़ती है. तो एम्प्लॉय कॉस्ट, जैसे मैंने बताया कि इन द एंटायर ऑपरेटिंग कॉस्ट 55 to 60% is the employee cost. और जब सैलरी हाइक होती है तो it adds the overall cost. So salary hike in the month of June is now deferred for the subsequent quarters. मैंने कहा कि now since the more trainee employees now converted into headcounts, billable headcounts, so the company is using more of their manpower. So overall, use of the employees has gone up substantially. कंपनीज ने कहा कि जो बीएफएसआई सेगमेंट है, देखिए आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यू है अलग अलग सेगमेंट से आता है. जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो बीएफएसआई यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज.
नो, यहाँ पे कंपनीज ये कह रही हैं कि देर इज अ साइंस ऑफ रिकवरी इन द एंटायर BFSI वर्टिकल. सो इट्स अ गुड साइन, क्योंकि सबसे बड़ा वर्टिकल आईटी के लिए यही होता है. अगर ये रिकवर हो रहा है तो ऑब्वियसली विल सी अर्निंग फॉर द कंपनीज टू रिकवर इन द नियर टर्म. Our deal pipeline is also quite good. So this is basically key takeaways of the recent result जो जून महीना अभी भी गया है. ये कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि हम आईटी सेक्टर ट्रैक करते हैं तो कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया, क्या कमेंट्री थी, ये जस्ट फ्यू एग्जांपल मैं रख रहा हूँ सामने आपके. तो बात करते हैं पहले इन्फोसिस की. तो यहाँ पे नंबर्स जो है अच्छे थे. कंपनी ने अपने गाइडेंस को अपग्रेड किया हुआ है, यानी जो पहले वो कर रहे थे कि XYZ से रेट से ग्रो करेंगे, नाउ दे हैव रेज देयर ओवरऑल गाइडेंस. तो ये पॉजिटिव साइन है. डील विन काफी अच्छा है, करीब 4.1 बिलियन का लार्ज डील पाइपलाइन जो कि 78% बढ़ा है YoY. तो ये पॉजिटिव साइन है इन्फोसिस के लिए. TCS का जो नंबर आया वो बढ़िया नंबर था, मार्केट के अनुमान से बेहतर था, फार बेटर देन दी आई वुड से मार्केट एक्सपेक्टेशंस. Company has done wage hike which is well digested by the company. Deal win very strong, $8.3 billion. So overall number is good for TCS also. HCL Tech का नंबर भी ठीक ठाक था, इन लाइन था, गाइडेंस मेंटेन रखा है कंपनीज ने. विप्रो, इफ यू सी, विप्रो का जब रिजल्ट आया तो उसके बाद में स्टॉक में थोड़ा सा हमने नरमी देखी. देयर वाज सम काइंड ऑफ हिट इन द स्टॉक प्राइसेस. दिस वाज प्राइमरली बिकॉज द जो कंपनी का अर्निंग था, इट हैज मिस्ड द मार्केट एक्सपेक्टेशंस. A couple of quarters back, I think few quarters back, the company was saying that there have been a recovery in the overall outlook. But जब उन्होंने नंबर डिलीवर किए तो नंबर was not as per the mark. So जो नंबर इन्फोसिस या TCS ने डिक्लेयर किए थे वो थोड़ा सा उनसे there was some kind of disappointment from the Wipro side. और इसलिए हमने स्टॉक में पैसा जो है गिरावट देखी. टेक महिंद्रा का नंबर ठीक ठाक था, एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन था. कंपनी इज सेइंग दैट गोइंग फॉरवर्ड जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है वो मेंटेन रखा जाएगा. अभी जो मार्जिन है अराउंड 8.5-8.6% के आसपास का है. दे आर टारगेटिंग कि 3 इयर्स में दिस विल गो अप टू 17%. सो टेक महिंद्रा का नंबर भी ठीक ठाक था. FSL यानी कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड का नंबर काफी बढ़िया रहा दोस्तों. यहाँ पे YoY और Q1Q दोनों में ही हमने अर्निंग ग्रोथ देखने को मिली है. प्लस द गाइडेंस ऑफ द कंपनी आल्सो गॉट अपग्रेडेड. The company is saying by FY26 they are targeting $1 billion revenue. So FSL, if you look at last 1 month में काफी अच्छा रिटर्न आया है FSL से. LTI Mindtree का रिजल्ट भी अच्छा था दोस्तों. यहाँ पे कंपनी कह रही है कि BFSI segment is now recovering well, so that's a good sign for them. हालांकि वेज हाइक इज डेफर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट क्वार्टर, तो उस लिहाज से मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है. Plus, the long-term target for the company is to have a $10 billion revenue by 2030 as compared to 4.3 in case of FY24 data. So, this is basically few key takeaways of the recently concluded results. Now, let's look at the recent just a few examples. I mean, how they have the company have delivered their earnings in the recent time. और उनका स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट रहा है. ओके, सो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं फ्रेंड्स, दी कंपनी विच आर हाईलाइटेड, दीज कंपनीज हैव डिलीवर्ड अ गुड नंबर. देयर इज ईदर YoY और Q1Q growth in their earning, that is sales and profit. और you can see here the last column is the percentage return, 1 month and 3 month we have shared here. So those companies who have delivered good return and better than the market expectations, they were being rewarded. In the last 3 months, if you look at Coforge up 29%, First Solution up 55%, HCL Tech up 25%, Infosys up 28%, L&T Tech up 17%, LTI Mindtree up 17%. So numbers अच्छे आए हैं, तो obviously companies are getting rewarded. Then few more company, like for example Emphasis, 3-month return is 26%, Quest Corp 10% return, Tata TCS has given 15% return, Zenseed Tech has given 29% return. So those company who have delivered the number, they were rewarded in the subsequent after the results. Now let's look at the sector outlook, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है it talks about the outlook of the entire sector.
So let us look at which are the positive criteria, or other we can say the positive development happening for the sector. So one is that friends कि जो BFSI सेगमेंट में रिवाइवल हो रहा है, दैट इज अ गुड साइन फॉर द आईटी सेक्टर. अगर वो रिकवर होगा तो वी विल सी द अपटिक के अंदर अर्निंग्स. सेकेंड, क्लाइंट्स जो पहले ये करते कि हमको कॉस्ट फोकस करना है, स्लोली हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी जो बजट है थोड़ा सा अब रिवाइव होने के कगार पे पहुंच रहा है. सो अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है इंप्रूव होगी तो विल सी द अर्निंग ऑफ द कंपनी टू गो अहेड. फुल ईयर हालांकि ग्रोथ 3 to 5% रहने की उम्मीद है. और जो अर्निंग सरप्राइज होगा वो मेनली इट कुड बी स्टॉक स्पेसिफिक. तो we believe that Infosys, LTI Mindtree, KPIT, Tech Mahindra, these companies should deliver good number going forward. इंटरेस्ट रेट साइकिल जो यूएस के अंदर है वो ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुका है. We believe that the interest rate now here on will decline, and that will help the global market, including IT companies, because अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कंपनीज विल बोरो मोर एंड स्पेंड मोर. सो उसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को मिलेगा. सेक्टर हैज अंडर परफॉर्म इन द रिसेंट टाइम. सो वी बिलीव दैट देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ री रेटिंग. वैल्यूएशन इज नॉट, नीदर आई कैन से वेरी एक्सपेंसिव नॉर आई कैन से वेरी चीप. डिसेंट वैल्यूएशन है. एंड जिसमें जो मिड कैप यानी जो छोटे या फिर जो मझोले जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, आई थिंक दे शुड डिलीवर बेटर नंबर गोइंग फॉरवर्ड. बट रिस्क के बिना कोई भी काम अधूरा नहीं होता. तो जब भी आप पॉजिटिव बात करते हैं तो जो रिस्क होता है सेक्टर के लिए उसके बारे में बात करना चाहिए. तो वी बिलीव दैट जो बड़े रिस्क हैं गोइंग फॉरवर्ड आईटी के लिए, एक तो यूएस का इलेक्शन है, तो नए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, वीज़ा फीस जो है वो बढ़ेगा या कम होगा. ये क्योंकि वीज़ा फीस जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो है कॉस्ट कंपनीज का बढ़ जाता है. तो ये एक बड़ा रिस्क रहता है कंपनीज के लिए. मैक्रो इन्वायरमेंट, अभी जब हम बात कर रहे हैं रिसेंट रिजल्ट की, तो कंपनीज ने कहा है कि देयर इज अर्ली साइन ऑफ रिकवरी, यानी रिकवरी तो हो रही है बट मैक्रो इन्वायरमेंट अभी भी चैलेंजिंग लग रहा है. तो अगर रिसेशन का ट्रेंड आता है, रिसेशन कुछ हो गया, तो वो बड़ा जो है नेगेटिव हो सकता है आईटी कंपनीज के लिए. और फ्रेंड्स, जितने भी उनके मैन पावर हैं आईटी कंपनीज के, वो उनका यूटिलाइजेशन जो है वो पीक पे पहुंच चुका है. तो आगे चल करके अगर उनको नए डील्स को रैंप अप करना है, नए डील्स को एग्जीक्यूट करना है, तो दे हैव टू हायर मोर, या उनको बाहर से वर्कफोर्स ले आना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट. तो वहाँ पे वो थोड़ा सा बढ़ सकता है. वेज हाइक क्योंकि डेफर्ड किया गया है, तो वेज हाइक कभी ना कभी तो होगा, तो ये कॉस्ट वहाँ बढ़ सकता है. और शायद रिकवरी जो है फ्रेजाइल हो सकती है, यानी रिकवरी एकदम वी शेप ना हो, डब्ल्यू शेप हो या के शेप हो. तो ये कुछ ऐसे रिस्क हैं फ्रेंड्स नियर टर्म में जो कि आईटी सेक्टर को जो है प्रभावित कर सकते हैं या आईटी सेक्टर को जो अफेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने बताया है कि गोइंग फॉरवर्ड आने वाले समय में किस कंपनी का ग्रोथ कैसा रहने वाला है. तो ये डेटा जो है दोस्तों हमने लिया हुआ है ब्लूमबर्ग से, यानी कि जो कंपनीज हमने ली है यहाँ पे उनमें क्या ग्रोथ लग रहा है. तो इफ़ यू सी, यहाँ पे 11 कंपनीज के लिस्ट हैं और ये 2 साल का CAGR ग्रोथ क्या लग रहा है सेल्स, एबिटा, पैट में अगले 2 साल, यानी कि 2024 से 25 और 26, यानी कि अगले 2 साल में क्या ग्रोथ होगा, कंपाउंडेड ग्रोथ CAGR सेल्स, एबिटा और पैट में. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कोफोर्ज, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इन्फोसिस, KPIT, L&T टेक्नोलॉजी, मास्टेक, इन सब कंपनियों में ग्रोथ अच्छा देखने को मिल सकता है. इन सब कंपनीज का डिविडेंड यील्ड भी लगभग 0.5% से 2% के बीच में है. तो अगर आप डिविडेंड प्ले करना चाहें तो ये भी आप कंपनीज दे सकते हैं. पी रेशियो अगर आप बात करें तो मैं यहाँ पे हाईलाइट किया इसलिए क्योंकि ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों को ध्यान में रखा गया है. तो हमें लगता है कि ये कंपनीज जो है आगे चल के अच्छा कर सकती हैं. देन सम मोर कंपनी हियर, क्वेस्कॉप, TCS, टाटा टेक का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था इस क्वार्टर में, बट आउटलुक उन्होंने कहा है कि अच्छा रहने की उम्मीद है.
टेक महिंद्रा में हम देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। तो हमें लगता है कि जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं इनमें ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ये डेटा हमने ब्लूमबर्ग से लिया हुआ है, जो उनके एस्टिमेट्स हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ अपने प्रेफर्ड पीट्स की, तो हमें केपीआईटी अच्छा लगता है। केपीआईटी हमारा आउटस्टैंडिंग कॉल भी है, और कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे 18 से 20% ग्रोथ होगा भविष्य में पर एनम। इन्फोसिस बड़ा प्लेयर है, नंबर अच्छे थे इस क्वार्टर के, अर्निंग्स में अपग्रेड है तो ठीक लग रहा है। एल&टी टेक्नोलॉजी जो है ये भी कंपनी अच्छी है, 8 से 10% का ग्रोथ कंपनी जो है टारगेट कर रही है, और आगे चल करके 1.5 बिलियन का रेवेन्यू जो उनका फिगर है वो कह रहे हैं कि वो अचीव करेंगे और रन रेट मेंटेन रखेंगे। टेक महिंद्रा, ये जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि टेक महिंद्रा का रिजल्ट जो है इन लाइन था, और कंपनी कह रही है कि आगे चल के वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस करने वाली है। और फर्स्ट सोर्स का सोल्यूशन का जो डेटा है, जो नंबर है, वो भी काफ़ी बढ़िया रहा। तो हमें लगता है कि ये कंपनीज आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा प्रेजेंटेशन आईटी सेक्टर। अगर आपका कोई सवाल है तो हम आंसर करना चाहेंगे। अपना सवाल चाहें तो इंटर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, हम उसको एक एक करके आंसर करेंगे। अमित चटर्जी ने पूछा है कि टाटा टेक में क्या लग रहा है। सो जैसे मैंने बताया कि टाटा टेक का रिजल्ट अच्छा तो नहीं था, लेकिन आउटलुक कंपनी ने अच्छा दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है भविष्य में। फिर नीले पारेख ने पूछा है कि विप्रो पे क्या व्यू है। सो विप्रो पे व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है हमारा। इफ यू रिमेंबर द विप्रो लास्ट फ्यू, एक या दो क्वार्टर पहले, द कंपनी वाज फर्स्ट टू कॉल आउट फॉर रिकवरी इन द अर्निंग ग्रोथ, बट जब उनके नंबर आए तो थोड़ा सा वो उतना अच्छा नहीं था। सो इट हैज डिसअपॉइंटेड द स्ट्रीट। तो थोड़ा सा हमारा, आई थिंक अभी अर्निंग कैसा होगा, हाउ दे विल डिलीवर, आई थिंक वी विल वेट फॉर देयर अर्निंग टू डिक्लेयर देयर सेकंड क्वार्टर एंड देयर आउटलुक, देन प्रॉब्ली विल टेक द कॉल। अदरवाइज फॉर द टाइम बिंग हमारा भी उतना पॉजिटिव नहीं है विप्रो को लेकर के। Then Nile Park again asking, it is a good start to SIP in Nifty ITBs. See, I mean, the way IT sector has underperformed in the last 3-4 months, or let's say 3-4 quarter, one can have slightly overweight in the IT sector. But ITBs or IT index, for example, any mutual fund or ETF having the higher weight in the IT sector alone can be slightly risky, because sectoral fund जितने भी होते हैं वो risky होते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए यहाँ पे, it can backfire also, so just be careful on that. Then Rahul Nikam is asking, please give view on some of the company Happiest Mind, KSOL, Tata Tech. So Tata Tech, as I said, we are positive on that, and the numbers were good. I think one can, if there is a portfolio, then maybe you can hold it for long term. Birla Soft has also delivered good return, but our preferred pick will remain Infosys, TCS, and Tech Mahindra, FSL, KPIT. These companies are better. Friends, there are so many companies that we do not track, so it's difficult for us to share any kinds of view. But we'll try and answer as many questions as possible. क्योंकि सारे कंपनीज हम ट्रैक नहीं करते, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए आंसर करना। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन है वो सेक्टर स्पेसिफिक हो, तो और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए आंसर करना। Then someone is asking about Page Industries. Again, I would say that fundamentally it's a good company, but detailed discussion थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
we want to restrict our discussion with IT sector only. Then Birendra Rajput is saying KPIT first source, which is better for. I think KPIT is good. KPIT में हमने कुछ slowdown देखा नहीं है earnings के अंदर. They have done fairly well. Their outlook for the growth is really looking good. 18 to 20% growth they are targeting about the near term. So I think KPIT can be a good option for the long term investment perspective. Then Vaibhav Singh is asking about Maharashtra Seamless Pipe and KNR. So both companies are good. I mean, they are basically part of the infra story of the country. So nothing negative to say on that. Um, then any IPO in IT sector, I think we'll have to see any companies on that. Then Manoj Matthew is asking about defense sector. So I think defense sector has given a very good return in the last 3-4 years. Many companies have become multi-bagger, and though we have some companies in our coverages, we cover Zen Technology, in the IT in the defense segment. That company is looking good for a long-term investment perspective. HAL asking, HAL is also a good number. I mean, they have delivered good number previous quarter. Though we do not have much details about their current order book, etc. But I think whatever they have given in their conference call during the fourth quarter result, they sound very optimistic about the growth outlook for the long term. So 94,000 crore ka order book hai, and the long term they are saying this year also they were going to win some 30-40,000 crore rupees of order. So overall, the view remain positive for HL. Then Siddharth Malik is asking any suggestion for the good mutual fund name for IT sector. So most of the Mr. Malik, most of the equity schemes carries some weight for IT sector, and there are sectoral funds also which are predominantly investing into IT sector, but that can be risky. So my suggestion would be always go for a diversified mutual fund which has representation for across the sector, but slightly overweight in the IT sector. So you can look at those mutual funds schemes. Then Saroj Manda is asking CDSL turn X bonus today. How do you see this company as evaluation wise? So fundamentally, the company is fine. There are multiple avenues for the growth emerging for the company. Largest depositor in India. So nothing wrong to say, but we'll have to cautious about the valuations as well. Long-term investor hai, so we can be invested, but be slightly careful as per the valuation is concerned. If holding in the portfolio, maybe you can remain invested. Then Amit Chatterjee is saying, please organize a webinar on manufacturing. Surely we will take the suggestion from you, Amit, and maybe in the future we will do some kind of webinar on the manufacturing sector also. So Rahul Nigam is saying, what is the view on the IT sector for next 5 years? So IT sector, Mr. Rahul, overall view remain positive. There are new things emerging in the whole IT sector, like cyber security, generative AIs, artificial intelligence, robotic, machine learning. There are a lot of area which is emerging in the IT segment, and IT companies is spending a lot of money in building the capability in this area. So if you find the companies doing these, in fact, most of the companies have some direct or indirect presence in these areas. So I think these segments have good future in the near term. So I mean,
overall view remain positive for the sector. फिर मिस्टर के कुमार इज सेइंग एलटीआईएम का क्या करें, तो एलटीआईएम का उतना अच्छा खराब रिजल्ट नहीं था, रिजल्ट ठीक ठाक है. इफ यू रिमेंबर, एक या दो क्वार्टर पहले कंपनी ने कहा था कि जो उनका मार्जिन का ट्रेजेक्टरी है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, यानी कि जो पहले अचीव करने वाले थे अब बोल रहे हैं कि थोड़ा और उसमें समय लगेगा. तो इस लिहाज से थोड़ा सा आईटी में, मतलब एलटीआईएम एंट्री में थोड़ा सा हमने गिरावट देखी थी. लेकिन अगर आप इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हैं तो डेफिनेटली आप उसको होल्ड कर सकते हैं. देन व्हाट अबाउट पारस फ्रॉम मिस्टर बीनू. पारस डिफेंस, if I heard correctly. So Paras Defense fundamentally is also a good company. I mean, they are into defense side, have good order book. तो विजिबिलिटी जो रेवेन्यू की है अच्छी है, तो उम्मीद करते हैं कंपनीज विल डू वेल इन द नियर टर्म. Then Mr. Vivek Yadav saying, when will the margin restore to 30% for e-margin? Currently, so essentially I think विवेक जी आप पूछ रहे हैं कि ई मार्जिन का प्रोडक्ट है या कंपनी का जो मार्जिन है, मतलब आईटी कंपनीज का. थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि जो मार्जिन कंपनीज का है, आईटी कंपनीज का, तो आईटी कंपनीज का मार्जिन जो है ऑफ लेट तो रिकवर होना चालू हो गया है. तो वी बिलीव दैट इन फैक्ट देयर आर सम कंपनीज हु गाइडेड फॉर अ बेटर मार्जिन इन द नियर टर्म. तो उम्मीद करते हैं कि मार्जिन उनका जो है वो ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगी आगे चल करके भी. Then CK Mahajan is asking about Mohannan asking about the Geo Finance. So fundamentally we are positive on the company. The company sooner than later will start the mutual fund or wealth management business. So I think the outlook for that segment is looking good. So view remains positive for GeoFin. Then Tata Power, I mean, we will rather focus to restrict discussion to the sector as a whole. So Tata Power can't say much negative about this company. Fundamentally looks to be fine. And then Ola Electric recently listed. We don't have much detail about the company, so we can't share anything on that. Then Mr. Ram Lakhan Kushwaha is asking about which company in IT sector is doing best. So as I told you, Mr. Ram Lakshan जी की जो कंपनीज हमने बताए हैं अभी रिसेंट जो दिया हमने प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे KPIT, इन्फोसिस, टाटा टेक, तो ये कुछ कंपनी या टेक महिंद्रा, आई थिंक ये सब कंपनीज जो है आगे अच्छा करेंगी ऐसा हमें लगता है. तो आप इन कंपनीज पे आप ध्यान दे सकते हैं. Then Mr. Parth Shah is asking, I have 100 shares on Infosys. Should I hold for long term? I think you can remain invested in the company for long term. So our view remain positive for Infosys. Then Mr. Virendra Singh is saying about Tata Technology. I think कंपनी अच्छी है सर. लास्ट क्वार्टर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, बट आउटलुक जो है नियर टर्म में अच्छा लग रहा है. कंपनी कह रही है कि आगे चल के जो डिफेंस एरोस्पेस है वहाँ पे अच्छा ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा करेगी. देन बेस्ट कंपनी फॉर क्लाउड मैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो राहुल जी, स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात करना मुश्किल है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी विच आर लीडर इन देयर ओन सेगमेंट, फिर वो चाहे इन्फोसिस हो, TCS हो, सभी में कहीं ना कहीं क्लाउड मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी में ही है. तो जिनका ज़्यादा वेट होगा ऑब्वियसली they will do better. So I think most of the company have some flavor in AI or let's say cloud. Mr. Ramchandra Rao is asking about SBI, and sorry sir, being part of SBI we cannot share any view on SBI because that's because of the compliance reason. So हम उस पर कोई बात नहीं कर पाएंगे. Very sorry for that. Mr. Parth Shah is saying having model for 70 quantity
at 585 long term. I think fundamentally his company is good. Nothing wrong in terms of fundamentals. So view remain rather I would say positive. Mr. Chandrakant Maske is saying the view on the rail sector. I think rail sector is doing good. Government spending a lot of money on the railway infrastructure. Just to give you example, we were listening to some management commentaries in the recent quarter result and अमृत काल फेज जो होगा यानी कि अभी से लेकर के 2047 तक when इंडिया बिकम when इंडिया अचीव 100 years of independence तो there is a talk that over the next 25 years 25 lakh crore will be spent on the railway infrastructure. So I think गवर्नमेंट का फोकस मॉडर्नाइज करने का वो मेंटेन्ड है यहाँ पे. तो इस साल का बजट भी काफी अच्छा है रेलवे के लिए. सो आई थिंक द रेलवे कंपनीज आई थिंक दे शुड वेल डू वेल इन द नियर टर्म. Then CDS, I think I already given my view. Wipro, I have given the view on earlier question. Any penny stock, Mr. CK Mohan asking. Sorry, sir. We can't recommend any penny stock here. See, it is a myth that penny stock always give good return. There may be cases where penny stock can become multi-bagger or large cap. But generally, we refrain from recommending such companies. We will rather, recommend you to buy quality companies having good business model and run by good management. I think those are very important thing for any fundamental analyst or any investor to look at, rather than just chasing a company which is low price, 10 rupiah, let's say, or 1 rupee, 5 rupees, whatever. So high price does not mean the stock is expensive, and low price does not mean the stock is cheap. You have to look at the fundamental. Then Mr. Shamal Sarkar is saying SBI Security caps application notification reached delayed. I would suggest Shyamlal ji, if you go to our website, वहाँ हमारे सारे कॉल्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. देखिए जब हम भेजते हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है 3 या 4 सेकंड का, क्योंकि हम इंसान ही हैं. जब हम कोई इस कॉल भेजते हैं तो थोड़ा उसमें 1-2 सेकंड का डिले हो सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है. बट अगर आपने ऐसा कहा है तो हम चेक करेंगे अपने साइट से और इंश्योर करेंगे कि डिले से ना पहुंचे आप नोटिफिकेशंस आपके लिए. Then IRFC, I think fundamentally looks fine. Then we have chemical segment. Somebody is asking about chemical का क्या लग रहा है. So I think chemical segment has not done well in the last few years or so, but I think they should start now doing good. So I think the view remain positive for a chemical segment. Then BPCL, someone is asking. I think BPCL fundamentally looks to be fine. ऑयल के दाम जो है नीचे ही हैं, क्रूड के दाम उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो उनका रिफाइनिंग मार्जिन है वो बढ़ेगा. तो आई थिंक BPCL शुड डू वेल. Then Zomato, someone is asking, Rahul Dikam is asking about Zomato, delivery, Zaggle. So Zomato particularly we are positive on that. जिस तरह से कंपनी एक्सपांड कर रही है अपना बिजनेस, we believe that Zomato will do well in the near term. Timeline platform, we don't have any ready view on this, but we'll check cross and then probably we can get back to you on that. रिलायंस पावर जनरली ऐसी कंपनी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, तो डोंट एनी रेडी व्यू ऑन रिलायंस पावर. पावर सेगमेंट अगर आप देखते हैं तो आई थिंक NTPC कैन बी अ गुड ऑप्शन टू लुक एट. We also have coverage on KPI Green, which is into renewable powers. Inox Wind has given a very decent number. The outlook also very good. So ऐसी कुछ कंपनी है जहाँ पे हम देख सकते हैं. Then UPL पे someone is asking, I think in the agrochemical side, our view is largely more
पॉजिटिव टूवर्ड धानुका एग्रीटेक जो हम कवर करते हैं, फंडामेंट दैट्स अ गुड कंपनी अगर आप देखें तो. सो SBI, and we can't share any view, Mr. Rajkamal Jaiswal ji, because we are part of SBI, so compliance reason we don't want to recommend. Then Randhir Rao asking about JW Infra. I think fundamentally it's a good company. अगर आपके पास है तो you should maintain, remain invested in the company. Deepak Fertilizer is also a good company. I don't have any negative about the company. I think fundamentally it's a good company. Anybody else want to ask any question? Then CPC ETF future कैसा रहेगा? Mr. Uday V Singh is asking. So अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई थिंक निफ्टी ETF है या फिर CPSE ETF है, बोथ आर गुड ऑप्शन. बट थोड़ा सा रिस्क जो है वो बढ़ जाता है. जब PSU कंपनी अच्छा करेंगे देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न. नहीं करेंगे तो अच्छा रिटर्न नहीं आएगा. देन BEL पे कुछ सवाल हैं. मिस्टर निर्मला शर्मा आस्किंग अबाउट द व्यू ऑन. Let me once again. Uday is asking about the BEL, Bharat Electronics Limited, if I heard correctly. So I think Bharat Electronics have good order book. Visibility for revenue is good. So I think defense में अच्छा player है BEL. So अगर already है portfolio में तो we can remain invested. PC Jewelers, we don't want to recommend at present on that. We don't have any view on PC Jewelers, friends. Sorry for that. Best undervalued stock now. So Mr. Believe Bar was asking about best undervalued stock. So Mr. Dilip, to identify a company which is undervalued, you have to look at what the company is doing, their business model, the growth outlook, okay, the management. And if you find that going ahead, if the company is able to grow 3 times, 4 times, 5 times in the 3 years, 4 years time, then you can say that company is undervalued. Okay. So we as an analyst keep on giving recommendations. We have a lot of product across different area. For a day trader to, let's say, long-term investor, we have a lot of product, and these reports are available freely on our website. उसकी आपको लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. You can go straight away and download all the reports available on the website. So there we recommend the companies, and those companies which are fundamentally good, you can we recommend that, and you can go and buy those companies. Then the view on LIC. LIC looks to be good. I think since IPO, the company has been range bound, but outlook is decent for long-term investors. HDFC Bank, Mr. Ramchandra Rao is asking, can I buy? See, fundamentally, it's a good bank. I mean, of late, the bank has not performed well, but I think the after merger, is one of the largest bank in India. So I think the bank should do well in the near term. Then Mr. Murthy asking about brokerage reduction in the cash intraday. So I would suggest to get in touch with our RM, Mr. Murthy, and discuss these things with him, and he will help you in that case. Then Mr. LK Patel is asking about the PFC and IEX. See, IEX, there is a issue of the regulatory headwind that if in the power trading platform is some, we already have seen the competition. So there's a lot of overhang in that segment. So थोड़ा सा वहाँ पे risk रहेगा. PFC looks to be good fundamentally. So I think they should do well. Then Mr. Parikshit asking about the Tata Tech. So I have given my view on Tata Tech. That fundamentally it's a good company.
CK Mohannan asking about S Bank. Sorry, sir, we can't share any view on S Bank because S Bank itself is a part of SBI. So, for a compliance reason, we can't share any view on that. We will continue for next 2 3 minutes more, and then we can wrap up the things. Mr. Rajkamal Jaiswal is asking about the bell. So I think I have given my view on the bell. So I think the view remain positive on the company. Then Mr. Murthy is asking about some analysts are saying book profit and sit on cash. So Mr. Murthy, whenever we have a market like this, which is at all-time high, so entry in the stock market is important. Exit is even more important. So if you are sitting on a good profit, so nothing wrong in booking 15-20% of the value of your what you call as the holdings into profit, and these money can be used for the future. As an analyst, we do not know the top and the bottom of the market. So obviously, whenever you get an opportunity to book profit, you should book it, because booking profit, entering again, is also very very important, rather than just holding it for longer period of time. And so in case of a bad market, the stock goes down, you may have to wait longer to recover your profit. So my advice is that if you are sitting on a good profit, booking profit is always advisable. Then Cochin Shipyard, can I average? Fundamentally, nothing wrong with the company. Maybe valuation could be a factor, because stock has given a dream run in the last 2 years or so. So maybe if you want to average, be very selective on that company. Though fundamentally we don't have much negative to say on that, but just be cautious when it comes to averaging at the lower prices. Latin View, fundamentally it's a good company. Results were good. So View is looks to be decent for that segment. Mr. LK Patel is asking about 2 years new investments there. So I would suggest Mr. Patel to visit our website. We have a lot of stock ideas share in that segment. So you can download the report and read it, and then maybe you can decide if you want to buy those companies or not. So my suggestion is that. Then SJVN and NHPC both are fundamentally good. I think the government focus on the overall renewable energy remain very very sound. So I think that should help the SJVN and HPC both company. Then Sterling and Wilson Solar. I think entire solar segment is doing good. So I think Sterling Wilson also do well in the future. In the next 1 minute, we'll try and wrap up the things. So if anyone has any other question, please put it in the chat box. We'll try and answer it. Z Entertainment, frankly speaking, we are not tracking that company, so we can't share any view on Z Entertainment. In next 1 minute, we'll try and wrap up the things. So if anybody has any other question. So Mr. Rahul Nikam is saying which sector is more promising in the future as per SBI Security team. So that's a very good question, Mr. Rahul. So we believe that in the near term, since the bank has not done well, so select private sector bank can be, so banking sector should do well in the near term, especially private sector bank. Railway defense remain a flavor, though there is a valuation concern, but I think selectively अगर वहाँ पे companies मिलती हैं तो obviously you can pick and choose. Chemicals have not done well in the last 2-3 years, so chemical companies can be
part of your portfolio. Pharmaceuticals have not performed in the last 2-3 years after COVID onset. So I think pharma पे भी आप ऐड कर सकते हैं कुछ pharma companies. Then company which are into electronic manufacturing, जैसे अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, डिक्सन है, अंबर है, यहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है. So I think these companies should also do well. IT of course things are recovering for them, तो IT को आप इग्नोर नहीं कर सकते, but again don't be very overweight on the sector as a whole. तो आप IT को as a part of portfolio जरूर रखते हैं. देखिए when you're trying to build portfolio, let's have flavor for every sector. फिर चाहे बैंक हो, फिर चाहे IT हो, ऑटो हो, pharmaceutical ho, FMCG, you should have everything in your portfolio. Having representation for all sectors can help you to mitigate the risk, because हर रैली में या हर डाउन टाइम में कोई ना कोई सेक्टर चलता है, and some sector will fall, some sector will move up. So having a diversification across different sector will help you. So these are some of the sectors that we believe can do well in the near term. So, friends, that's all from our side. Thank you all for joining today's session, and we will continue to bring more such, exciting webinars in the near term. So, thanks all for joining. Thank you.